7. Combination of triangles. Last period we have seen the corresponding angles and the corresponding sides of two different triangles. Now we see here the example. Example 1. Triangle ABC and triangle PQR are congruent, under the correspondence under the correspondence ABC correspondence to RQP. Now write here, students, the corresponding sides and the corresponding angles. Already we have given here these triangles are congruent, and we write here the corresponding part. This corresponding part is corresponding sides and the corresponding angles. So here A, B, C, and this side R, Q, P. Here A is a correspondence to R, then B corresponds to Q, and C corresponds to here P. Now we write here the corresponding sides. Here AB, this AB is corresponds to here is RQ. We write here AB corresponds to RQ. Then BC corresponds to QP, and the AC it corresponds to RP here. These are the corresponding sides of these two triangles, and now we write the corresponding angles. Here first one is angle A corresponds to here is angle R. जिस तरह से हमें चीजें दी हुई यहाँ पे कि ABC corresponds to RQP, उसी तरह से डिसाइड होगा कि corresponding एंगल क्या होंगे, corresponding साइड्स क्या होंगे. जो दिए हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट में वो अलग है, और जिस तरह से उन्होंने correspondence दिया है वो अलग है. जिस तरह से उन्होंने दिया है correspondence, उसी हिसाब से हमें corresponding sides, corresponding angles जो है वो डिसाइड करनी है. तो एंगल A corresponds to यहाँ हो जाएंगे एंगल R, then एंगल B corresponds to एंगल Q, angle B corresponds to angle Q, and angle C corresponds to here angle P. These are the corresponding angles here. Now after that we see the new exercise 7.1. Here first question is complete the following statements. Two line segments are congruent. कोई भी two line segments अगर congruent होती हैं, suppose this is the AB and this is the CD. These two line segments are congruent here. That means the lengths are equal. इसका मतलब यहाँ पे इनकी length equal है. They have the same length. Suppose it is 7 centimeter, it is also 7 centimeter. उनके length equal होने पर ही वो segments congruent हो जाते हैं. So here statement is two line segments are congruent if they have the same length. Same length होने के कारण line segments congruent है. Then B, among two congruent angles, one has a measure of 70 degree. The measure of the other angle is 70 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने पर वन एंगल का मेजरमेंट अगर 70 डिग्री है तो उसी के करस्पॉन्डेंस एंगल का मेजरमेंट जो है वो भी 70 डिग्री होगा. देन वी सी वी राइट व्हेन वी राइट एंगल A इक्वल टू एंगल B, वी एक्चुअली मींस एंगल इक्वल मींस क्या होगा,
angle A is equals to angle B और angle A congruent to angle B या फिर हम angle को congruent बताते हैं. That means the measure of angle A equals to measure of angle B. उन दोनों के मेजरमेंट इक्वल है, इस वजह से वो एंगल कॉन्ग्रुएंट है या फिर दो एंगल्स पे इक्वल है. तो रीजन हमारा ये होता है कि उनके मेजरमेंट इक्वल है. मेजरमेंट जो भी डिग्री होगी उनकी उन दोनों के लिए सेम हो. In the question number 3, now we see here the question number 3. Question 3, if triangle ABC congruent to triangle FED, we write here triangle ABC congruent to triangle FED, and under the correspondence ABC corresponds to FED, write all the corresponding congruent parts. Means you have to write here the corresponding angles and the corresponding sides here. Here is ABC corresponds to here is FED. So we write here A B C F E D. A corresponds to F, B corresponds to E, and C corresponds to F here. So now we write the corresponding lengths and corresponding sides and the corresponding angles here. Corresponding sides. Corresponding sides here is AB corresponds to FE, then BC corresponds to ED, and the AC corresponds to FD here, and the corresponding angles here is angle A corresponds to angle F here, angle A corresponds to angle F, B corresponds to E, C corresponds to D. We write here angle B corresponds to angle E and angle C corresponds to angle D. These are the corresponding sides and the corresponding angles. And then question number 4. This question is homework for you.